Hello everybody. Good evening everybody. Good evening all. I hope I am audible clearly. I hope you can hear me clearly. Okay. Pilamane aji we will be discussing about second week of May. Correct. So it got a different mode neba. This would be a quiz basically. Gote question mu pachari chalbi. If you know the answers, second week of May jodi bhal se podi chanti, you can give the answers. Okay. The first and the very important thing. गोटे लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन जेतलो करूछन ना एग्जाम पई यू नीड टू कीप यू नीड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड राइट सो एक किछटा एमतिया टर्म थाए कोनसी प्रकार कोट्स हला एवरीडे आपन किछि ना किछि से बूस्ट करे ओके सो सब बेले एनर्जेटिक रहिबाटा ये एग्जाम रो डिमांड आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट कोट आइदर यू रन द डे दैट मींस यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन और यू आर बीइंग डोमिनेटेड माने कथा होची सकाळ उठला माने यू नो व्हाट टू डू दैट मींस यू आर ऑन ए कमांडिंग पोजीशन यू आर कमांडिंग योर लाइफ और आइदर योर लाइफ इज कमांडिंग यू ओके दैट इज अप टू यू है ना ये स्टेटमेंट को यार माने या जे निजर जो एफर्ट्स गुडा एई भाबरे दोथिबे जे एटलीस्ट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड okay you should not be confused with your life all right chalo to start kariya in which year was the Explosives Act proposed to be replaced with the new explosive bill 2024 May second week ro ye goto question Explosive Act kebe enact heitla of course eta British man ko era re hi enact heiche that I can say all right gote term thila RDX class re term ta discuss karithili what is this RDX yes Somu Singh 1884 yes Somu is correct okay this was in 1884 right the year was 1884 all right tikke mone pakaantu ya just पर वर्ष 1885 रे कोन तयारी हितला Indian National Congress mone pakaantu tike okay then in which Indian state did the Indian Army and the Indian Air Force conduct a joint exercise titled Gagan Strike 2 and this states are Punjab, Rajasthan, Haryana, Uttarakhand. Okay. So Indian Army and Indian Air Force, Gagan Strike 2. So you see, this answer is this is Punjab. Correct. Pila mane ame agote session neba ya upre all the military exercises उपरे कौन करिबा गोटे सेशन डेफिनेटली नेबा हमें ओके आउ ताकू केमिति हमें मन रख परिबा ता उपरे मु आपन को स्ट्रेटजी गुडा कहबी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक तो आयुष गोटे बहुत ही माने एज ओल्ड क्वेश्चन यू कैन से आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम इनटू पावर ता पर कोन करछि आयुष मिनिस्ट्री गोटे तयारी कला ऑलराइट AYUSH ओके A stands for Ayurveda all right Y stands for yoga and naturopathy U stands for Unani all right and S stands for Siddha all right H stands for homeopathy so eta hochi Ayush ro full form first question ta yahi pacharchunde exam re Ayush kon okay then एथिरे गोटे ट्रेडिशनल मेडिकेशन फॉर्म रोची कोटा जोटा को हमें यूनानी कहउचंती राइट सो यार आंसर कोन हे गला ना सुबोध कुमार सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर रिमेंबर ए टाइप रे क्वेश्चन एग्जाम रे आसुजी देन व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स ओके रिलीफ कैंप कोची माने एटा को रीजन हेतिबो देखो ना सब ही स्टेट गुडा रहउची कार माने पाखा पाखी बॉर्डरिंग रीजन रहउची ओके सो दिस स्टेट इज मणिपुर जोटी इनफिल्ट्रेशन अधिकार रोची माने एपर साइड रो रेफ्यूजीज माने अधिकार जाउतंदे सो आंसर तो सहीठी ही होबो ओके नेक्स्ट यू सी अच्छा मणिपुर उपरे मु कहितली आपन को पिला माने मणिपुर गोटे वर्ष पूरा हला न्यूज रो अछि ओके टोटल गोटे ईयर न्यूज रो अछि हना सो मणिपुर उपरे आपन कोन जणा थिबा दरकार ना जत्ते बेले भी एमितिया कोनोसी प्लेस डिस्कस करिवे की डिस्कवर करिवे तारो पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखिबे पॉलिटिकल एस्पेक्ट राइट पॉलिटिकल एस्पेक्ट परे आछे कोन ना ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट परे आसीला कोन ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट राइट तापरे आसुजी कोन ना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट
तार हिस्ट्री राइट तार साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड फाइनली आसुची कोन ना तार तार इकोलॉजिकल एस्पेक्ट राइट सो दिस इज अबाउट माने गोटे गोटे पर्टिकुलर स्टेट की गोटे पर्टिकुलर प्लेस को केमती डिस्कवर करी ओके नेक्स्ट व्हिच कंट्री इज द होम टू द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल तामजा ब्लू होल सो देखो एक कंट्री टा कोटा चाइना ब्राजील कनाडा मेक्सिको डीपेस्ट ब्लू होल तामजा ब्लू होल गोटे सरप्राइजिंग क्वेश्चन हिसाब रे आसपारे दिस इज मेक्सिको करेक्ट दिस इज मेक्सिको मेक्सिको विषय रे टिके मने पकेबे मेक्सिको एंड यूएसए रो बॉर्डर पाखरे गोटे आयरन वॉल अछि राइट माने गोटे गोटे तार बॉर्डर जोटा यूएस मेक्सिको रो जो आयरन वॉल बॉर्डर अछि ना ए बॉर्डर टा गोटे देखिबे तो कोन एथर यूनिकनेस अछि राइट अच्छा ऑन व्हिच डे वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज ऑब्जर्व सिंपल क्वेश्चन हुए तो आमे मे ही डिस्कस करछंती बोली आपण इधर गेस करी गोटे कहि देबे ठीक अछि किंतु गोटे ईयर रो जदी करंट अफेयर्स आसे सेइथरु को डेटा को आपण धरिबे दिस इज इंपोर्टेंट ओके दिस वाज मे 8 the theme of the world red cross day and red crescent day is I give with joy and the joy I give is reward so देखो जिते बेले एमतिया कोनोसी डे देखिबे मस्ट मन रखिबे तार थीम मन रखिबे तार दिस इज योर ड्यूटी ओके ता थीम ऊपर नजर पकेबे ओके दिस इज मे 8 देन व्हेन इज वर्ल्ड थैलासेमिया डे एक तो एमितिया इशू आसला माने आपण देखिबे थैलासेमिया टा की प्रकार डिजीज व्हिच काइंड ऑफ डिजीज whether it is a hereditary disease whether it is a zoonotic disease whether it is a you know uh, any other kind of a disease you say thalassemia so it has again this is may 8 now which country is planning to use orangutan diplomacy देखले यार आंसर कौन हो पुनी orangutan diplomacy to address concerns about the environmental impact of palm oil production correct ये आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस इज मलेशिया ठीक है मन पकांतु क्लास रे गोटे क्वेश्चन कहितले आपन को देयर आर टू मेजर यू नो प्रोड्यूसर कंट्रीज ऑफ पाम ऑयल गोटे मलेशिया आ गोटे हला इंडोनेशिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 90% of the world's production of palm oil is coming from Indonesia and Malaysia. India is heavily dependent upon that. तो आपन को जଣା थिबा दरकार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ताले आराम से यार आंसर कर पेरिबे देन what is the name of India's first BFSI focused large language model unveiled by Setu अच्छा यार आंसर जानिया पूर्व पिला माने when I say these language models यार parallelly out जिंस कहितले मन पकांतु what is this artificial intelligence आउ तारो अलगा अलगा aspects artificial intelligence जदि मु कहिबी यार अलगा अलगा aspect जेमति गोटे कहिबे deep fake कोन deep fake गोटे हला machine learning हला गोटे हला chat GPT गोटे हला ए टर्म गुडा जानि चंती की ओके या को टिके भलो से सर्च करिवे सो दिस आंसर इज सीसम देन you say this one which country did India surpass to become the world's third largest solar power generator in 2023 एक तो solar power class रे discuss करूथले मन पकांतु solar power is a you know renewable resource ताले एमिति आउ कोन कोन renewable resources अछि टिके चेक करिवे ओके अच्छा आउ कोन ना can I say this
जे which is called buried sunshine. What is this buried sunshine? A question टिके search करिवे. What is this buried sunshine? Okay, so this answer is Japan. Japan, correct. गोटे क्लास रे हम डिस्कस भी करथले जापान रो अलग अलग एस्पेक्ट. Japan comprises of 4 islands. Japan is an archipelago. In which state did the Indian Air Force conduct Bambi bucket operations to combat forest fire? Simple answer यार. Forest fire recently कोठी लागितला उत्तराखंड रे. किंतु ए न्यूआ टेक्निक टा देखंतु बाम्बी बकेटिंग एटा केमिति काम करे ना एथरे गोटे बकेट रे कोन करछि हेलीकॉप्टर आसी कि पानी नेकी जाउछि एंड अल्टीमेटली कोन करछि गोटे जागा रे नेकी पोर करछि. Okay, so this is the mechanism behind Bambi bucketing technique. In which state did election commission successfully conduct voting at the highest polling booth? Highest polling booth. एक तो जदि मु इंडिया पर्सपेक्टिव रे पचारिबी जे इंडिया रो हाईएस्ट पोलिंग बूथ कोड थिबो एटा बेसिकली लद्दाख अल्टीट्यूड रे सबटु ऊंचा रहउछि किंतु एई ऑप्शन रो कोटा कहिबा दिस इज महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र को बहुत थर मु कहि जी भी डिस्कवर भी करे जी पिला माने महाराष्ट्र नेशनल पार्क हला तापरे महाराष्ट्र रिवर्स हला. नासिक पाखरु गोटे रिवर ओरिजिनेट होछि मन पकांतु. महाराष्ट्र रो ओल्ड नेम कोन थिला and so. Who recently became the first Indian bowler to achieve 350 T20 wickets? Of course, पुओ पिला माने ए क्वेश्चन भूल करिवेनी. बेसिकली तांकर अधिका इंटरेस्ट थाई क्रिकेट रे. किंतु जदि भी नाही ना ताले you just keep this question in mind, right? Where is the West Nile virus first detected? West Nile virus. अच्छा, West Nile virus टा एमिति नु जे अफ्रीका रे ही डिटेक्ट हेतिबो. Okay, this answer is Uganda, of course. किंतु you see this Uganda जेतेबेले एमितिया स्टेट देखिबे तार मैप देखिबे. Okay, Uganda, you see Uganda रे कैपिटल कोन हे गला एठी असला Uganda. Kampala is the capital, all right. Then एथरे देखंतु कोन कोन फीचर्स अपन देख परछन. Lake Victoria, you see it is at the tri junction of 3 countries. गोटे हला एपटे केनिया रहउची, एपटे साइड रे तांजानिया रहउची, एपटे युगांडा रहउची. Okay, Nile river is actually originating from this. है ना. देखिए जेते सब ट्रॉपिकल डिजीजेस गुडा ना पिला माने शुभम यू आर राइट. दिस इज युगांडा. सो जेते सब ट्रॉपिकल डिजीजेस गुडा ना मोस्टली जेगुडा हम कहबा गोटे थिला you know is amaro this river, you know, Congo river पाखरु किछरा डिजीज हेतला. कारण कि इट टेम्परेचर अधिका. सो डिजीज गुडा इथि बार चांसेस अधिका. Then you see which country leads global remittances surpassing the $100 billion mark in 2022. पिला माने मन रखथिबो जदि रेमिटेंसेस कथा आछी ना ताले श्योर शॉट आंसर टा होची इंडिया. मन रखथिबो बिकॉज़ रेमिटेंस कोन रेमिटेंस माने सपोज दिस इज आवर कंट्री. इंडिया रु बाहर को जाउचंती एनआरआई माने वर्षर एंड रे कि यू नो एट अ पर्टिकुलर टाइम जो पैसा इंडिया को पठाउचंती ना दोज आर कॉल्ड रेमिटेंसेस. ओके, अब या ऊपर गवर्नमेंट बहुत अधिका टैक्स पाउची जाको हमें रेमिटेंस चार्जेस कहउचंती. Okay, India is the largest earner of remittance in the world. Okay, एठी क्वेश्चन भी है पचारथली क्लास रे मन पकांतो. राइट, what are these FCNR? Right, FCNR कोन we discussed it. अच्छा, then so this answer is India, of course. Now when is world lupus day? What is this lupus? May 10. Lupus, an inflammatory disease caused when the immune system attacks its own tissues. माने tissues गुडा कोन हो जाय बेसिकली इथरे you know rash हो जाय टिश्यू रे. Then who was honored with the global pride of Sindhi award? देखो तो ये आंसर बहुत डिफिकल्ट नु हो कारण कि ऑप्शन रे ही यार आंसर देछि पवन सिंधी. किंतु ठीक अछि एमते क्वेश्चन बेले बेले आसी जाउछि. Which Indian wrestler has been provisionally suspended by the United World Wrestling? Who has been, right? This was Sushil Kumar. Simple answer यार. In which state has the Pirul Lao Paise Pao campaign launch हेतला? एटा कोठी हेछि? पिरुल टा कोन जानछन्ती? पिरुल होछि जो पाइन ट्री थाय ना, पाइन ट्री रो लीव्स उरा सब. पाइन ट्री रो लीव्स तो कहि परिबे ने, त नीडल्स कहि परिबा. माने तो लीव टा ही नीडल भलिया देखिया को.
ओके एथरे कोन हुए ना ये बहुत अधिका शीघ्र माने जो ड्राई नीडल्स उडा थाए ना ये कोन करे माने बहुत जल्दी इट हैज अ प्रोपेंसिटी टू कैच फायर वेरी क्विकली राइट दीज आर वेरी वोलाटाइल ओके सो दैट इज व्हाई माने टिके जदी स्पार्क हैला ता माने से निया धरला और टोटल फॉरेस्ट एरिया को से पोड़ी देबो सो उत्तराखंड रो ट्रेजेडी रो रीजन तो गोटे बहुत बड़ो रीजन है या तिरुल सो एटा किए थला उत्तराखंड थला ऑफ कोर्स एटा ही गवर्नमेंट कहूची तमे एटा आनी के दियो हमको आ मैं तुमको ता बदले पैसा देबो माने पर केजी केते टका देबो ना 50 रुपीस पर केजी ओके 50 रुपीस पर केजी है ना अच्छा यार ही गोटे पैरेलल क्वेश्चन आसी एग्जाम रे कोठी ना जदी मु कहबी यू सी व्हाट आर जेरोफाइट्स व्हाट आर दिस जेरोफाइट्स से क्वेश्चन पचारची जेरोफाइट्स रो फीचर्स पचार दीची एग्जाम रे जेरोफाइट्स रो फीचर माने जेरोफाइट्स हाउ दे सर्वाइव इन द desert environment okay the leaves the leaves have been turned into spines the stem is fleshy this is to reduce the water loss okay next which company partnered with Hockey India for National Women's Hockey League this answer is Coca-Cola basically Coca-Cola partnership kartla then which company received the world's first ISO see world's first ISO 42001 and 2023 certification for its artificial intelligence management system see artificial intelligence na jemti ame mone pakantu who was the inventor of this atomic bomb mone paduchi kichi atomic bomb ro inventor kiye thile ha Oppenheimer I think से thile man sie eta invent kala pore repent kale je mu konta tiya thili सिमिलरली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी डेवलप करूछन ना से भी दे आर इन अ पजल कि एक्चुअली याको वेदर वी शुड गो विथ इट और नॉट बिकॉज़ यार मिस यूटिलाइजेशन हमारो चांसेस अधिका अछि सेति पई कोन होची ना रिसेंटली दिस ऑर्गेनाइजेशन गॉट द फर्स्ट इन द वर्ल्ड सर्टिफिकेशन है ना एटा कियथला दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्फोसिस बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम रो इन्फोसिस then in which city was the Ashwa range of all-terrain vehicle with military potential developed? माने गोटे all-terrain vehicle develop कराई छी correct it was in Bangalore see this image correct एटा सब प्रकार रो लैंडफॉर्म रे ये ऑपरेट करि परिबो एतरे पछरे बसिबार भी सुविधा अछि सोल्जर्स माने एतरे किछरा कम से कम 3-4 जन बसि परिबे then who has been appointed as the executive director at RBI executive director of RBI पिला माने जो माने बैंकिंग पे प्रिपेयर हो चंद्रा समान को पई मन रखिबे you see this RBI is your homework RBI को भलो से जानि RBI रो गोटे होची तारो कांसेप्ट केमिति तयारी हला प्लस तारो करंट अफेयर्स जोटा हमें डिस्कस करछन दिस इज द करंट साइड ओके दीटा का एस्पेक्ट को जानिबे गोटे जनरल क्वेश्चन पचार जे RBI एस्टैब्लिश हला तो 1934 एक्ट अंडर रे ठीक अछि किंतु व्हिच कमिटी under which committee recommended the formation of RBI okay this is R Lakshmikant Rao then what is the theme of World Migratory Bird Day देखो migratory bird day रे हुए तो हमें भाबिबा birds ही थीम थिबो okay but you see this image what is this answer it is insects माने सरप्राइजिंग गोटे थीम माने हमें भाबिबा गोटे और यार आंसर आउट okay that means what why this theme has been adopted you know जानछन एग्रीकल्चर जते बेले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रे कोन होची ना इंसेक्टिसाइड गुडा यूज करा होची इंसेक्टिसाइड गुडा कोन करूची बेसिकली इंसेक्ट गुडा कोई मार दोची जदी इंसेक्ट माने मरि जिबे ताले बर्ड्स माने खाइबे कोन ऑलराइट एंड जदी ये गोटे जनरेशन मरि गला ता माने ता पर जनरेशन भी गला correct so yes Shubham insect is right okay so insect is the proper answer this is the correct answer insects okay अच्छा migratory bird रो गोटे क्वेश्चन या भी होमवर्क गोटे हुए तो जदी नहीं परिबे what are these migratory pathways इंडिया रे केतेटा migratory pathways अछि suppose I say चिलिका suppose इंडिया एठी अछि
इंडिया रो जदि अपन नॉर्थ नॉर्थ जिबे यू विल फाइंड हियर साइबेरिया, एठी साइबेरिया अछि। साइबेरिया रो बर्ड्स माने सीधा माइग्रेट करके इंडिया को भी आसुचंती और तांको अल्टीमेट डेस्टिनेशन रहउची चिलिका। ओके, सो चिलिका को जानिचंती, चिलिका को आउ भी कहउचंती डेस्टिनेशन फ्लाईवे जानिचंती। This is the reason why this is also called a destination flyway. Destination flyway. Why it is called destination flyway जानते? कारण कि साइबेरियन बर्ड्स मानकर अल्टीमेट डेस्टिनेशन होची चिलिका। करेक्ट, नियरली 1000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया पूरा है ना। Then which country collaborated with Nagaland to inaugurate the Kohima Peace Memorial and Eco Park? ठीक है, मन पकांतो हिस्ट्री गुटे जानतो। ऑलराइट, कोहिमा सहित कहार हिस्टोरिकल लिंक अछि। कोहिमा रे ना गोटे वॉर सिमेट्री भी अछि जानते? गोटे वॉर सिमेट्री अछि, ठीक है, इमेज देखिबे वॉर सिमेट्री है ना। तो तार फीचर्स गुडा देखुथिबि ठीक है। हां, ऑलराइट, सो दिस वाज जापान, दिस वाज जापान। नाउ व्हिच इंडस्ट्री ग्रुप हैज जॉइंड फोर्सेस विथ इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम? राइट, एल्यूमिनियम हिंडाल्को इज द आंसर। ओके, हिंडाल्को रो प्लांट इंडिया रे कोठी अछि? हिंडाल्को, राजेश, जापान इज द करेक्ट आंसर, आई कैन सी दैट। हिंडाल्को रो प्लांट ओडिशा रे कोठी अछि, चेक करी कहले। नाउ व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द ए कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट? मन पकेले SR-75, ठीक है, मन पकेले हमें मिसाइल डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया पढुतले। मो आपन को फ्यूल रो केतरा टाइप कहतली मन पडुची? फ्यूल रे गोटे आसुची सॉलिड फ्यूल, हम जाको फ्यूल कहउचंती। ऑलराइट, नंबर 2 आसला लिक्विड फ्यूल, आ फाइनली आसुची कोन ना गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल रे आउ गोटे टाइप मु कहतली पिला माने, आउ गोटे टाइप गैसियस अंडर रे कहतली कोन ना क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल रे ना दीटा जिंस यूज करा होची, गोटे हला लिक्विड हाइड्रोजन, आउ गोटे हला लिक्विड ऑक्सीजन, एंड दैट टू एट सब जीरो टेम्परेचर। माने एटा लिक्विड हाइड्रोजन रोची -183 डिग्री सेल्सियस रे, आउ एटा रोची -153 डिग्री सेल्सियस रे, है ना। किंतु एटा देखो एटा कोन लिखा छि, वैक्स पावर्ड रॉकेट, वैक्स रे एटा को पावरिंग करा हिची या तो दिस वाज रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जर्मनी। You can see this image, this is Germany, right? Candle wax, basically candle wax powered rocket, another milestone. Okay, so friends, we have come to the end of this discussion. This is a short and a very powerful class. Okay, I wanted to take it bit longer, लेकिन किंतु माने क्वेश्चन गोटे वीक रो ना सबुठी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उडा को एठी मु मेंशन करछि। ओके, सो लेट अस वाइंड अप द सेशन हियर टुडे। ऑलराइट, जदि एमती लागुची आउ टिके लॉन्गरिंग हेबा दरकार क्लास, सो यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, लिखि देबे, सो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। ओके, चलो, थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस क्लास इन द संडे इवनिंग। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, भल से प्रिपेयर करंतो, आपको बहुत गुड एग्जाम आसुची, प्रिपेयर करू थांतो भल से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, बाय बाय ऑल।